circuit represents the parallel magnetic circuit. Okay, where the resistance R1 and resistance R2 are connected in parallel with each other across the supply voltage V. Now all of you know that whenever two elements are connected parallel, at that time current flowing through them will be different, but voltage across them will be same. Is it correct? Yes. Yeah. Yes, How ma'am. will it Yes. Yes, ma'am. So you can write V is equal to I1 R1 and V is equal to I2 R2. I2 R2. Correct? And this total I is nothing but addition of I1 plus I2. Why? Because according to Kirchhoff's current law, current incoming currents is equal to summation of outgoing currents. So this current total I is nothing but the addition of I1 and I2. So similarly, we have to find the relation for parallel magnetic circuit. Now see, first will be now in your syllabus in bracket they mention that only theoretical treatment of parallel magnetic circuit, but इसमें theory क्या पढ़ाना है, तो ये यही उसकी relations हमें पढ़ना है. ठीक है? So in this parallel magnetic circuit, if you observe, there are two windows. Okay, this is first and this is second, and 1, 2, and 3. There are 3 legs or limb, L-I-M-B, limbs. You can call it as a leg or limb. So this figure represents the parallel magnetic circuits with 3 limbs. In all set, sorry, yes. आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. Clear नहीं आ रहा है? नहीं. Wait. बाकी के लोगों को आ रहा है क्या clear? हाँ मैम. अभी Yes, ma'am. ओके, तो जिसको नहीं आ रहा है प्लीज चेक योर नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा ठीक है सब कुछ. सो इन दिस डायग्राम दिस पार्ट A, okay, A to C, this is called as the central limb. Next A, B, C, this is one side, and A, B, C is the another side. Okay, now we have to find the MMF of this parallel magnetic circuit. As all of you know that the flux in magnetic circuit is analogous to current in the electrical circuit. So electrical circuit में current gets divided in parallel parts. So similarly, if we wound the coil on central part, हमने coil कहाँ पे wound किया है? Central part पे. So whatever flux will be generated, that flux will be generated through this coil. So this flux will start from this central limb and will get divided into 2 parts. The flux will get divided into 2 parts. So on this side consider it is phi 1, and on this side consider it is phi 2, and on central part it is a phi. Correct? So this total phi is nothing but phi 1 plus phi 2. Yes, जैसे यहाँ पे I is equal to I1 plus I2 था, वैसे यहाँ पे phi is equal to phi 1 plus phi 2. Now the area of first part is A1, second part is A2, and for central part it is AC, C for central. But as this diagram by observation you can say that all areas are same. So A1 is equal to A2 is equal to AC. You can write it. Okay. Now next, I want the MMF of this parallel magnetic circuit. Okay. So MMF is equal to N into I. यहाँ पे जैसे EMF और voltage is equal to V था, तो यहाँ पे MMF as number of turns are suppose N and current flowing through this coil is I. So you can write MMF is equal to N into I. Is it correct? MMF is equal to N into I. For A, B, C part, for A, B, C, for A, B, C और closed path ले सकते हो A, B, C, A path. ठीक है? For A, B, C, A path, what will be the MMF? क्या रहेगा MMF बताओ? क्या रहेगा MMF? Hello, reply. D. MMF क्या रहेगा MMF?
N क्या रहेगा? into phi 1 plus phi 2. I want in number of turns and current. I want the formula in number of turns and current. MMF is equal to. यहाँ पे बताओ, जैसे यहाँ पे दो पार्ट्स है, वैसे यहाँ पे दो ये ब्रांचेस है। तो फर्स्ट ब्रांच के लिए क्या था? वोल्टेज और एमएमएफ क्या था? हेलो, I1 R1. I1 R1 is equal to V and I2 R2 is equal to V. Means for both branches EMF और voltage remains same. Is it correct ना? Yes, yes, ma'am. So यहाँ पे भी क्या रहेगा? MMF टोटल MMF NI है। So फर्स्ट पार्ट के लिए क्या रहेगा? NI की। अरे बेटा N1 I1 कैसे रहेगा? यहाँ पे टोटल V है, फर्स्ट पार्ट के लिए भी V है, सेकंड पार्ट के लिए भी V है। तो यहाँ पे भी देखो ना N1 I1, यहाँ पे और कुछ N1 I1 दिख रहा है क्या आपको? No, ma'am. No, only one coil is there and which is having number of turns N and the coil is having the supply voltage V, correct? And current flowing through it is I. So for A, B, C, A, B, C, A, इसमें वही coil आ रही है, correct? Yes, ma'am. So N into I ही रहेगा ना उसका EMF. Yes, ma'am. यहाँ पे अगर मैंने पूछा what is the total EMF of this circuit, you will say V, correct? What is the EMF or voltage across the first resistance? You will say V. What is the voltage across second resistance? You will again say V. Then how you are saying N1 I1 है क्या यहाँ पे कुछ नहीं है ना? ये पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है, तो for both parts the coil as well as current is same. So for A, B, C, A it is N into I, which is equal to, now अभी बताओ मुझे N into I is equal to क्या आएगा? N into I is equal to क्या आएगा? Phi phi 1 plus phi 2. S1, So, correct ना? MMF is equal to another formula, flux into reluctance. Is it correct? yes, ma'am. MMF is equal to Phi phi into S. ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है और S is equal to Ni by phi और phi is equal to Ni by S. ये सारे रिलेशंस पता है ना आपको? तो नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट के फॉर्म में ये फॉर्मूला आया इज इक्वल टू, नाउ फ्लक्स एंड रिलक्टेंस के टर्म में क्या आएगा? phi1 S1. अभी यहाँ पे देखो phi1 मींस फर्स्ट पार्ट का फ्लक्स डिवाइड हो गया है, तो उसमें A B C पार्ट के लिए phi1 S1 एंड मिडल पार्ट के लिए सपोज phi एंड रिलक्टेंस है S. यहाँ पे दो ब्रांचेस है लेकिन दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है? डिफरेंट है. दोनों ब्रांच के करंट क्या है? डिफरेंट है. सो V is equal to I1 R1 है, V is equal to I2 R2 है. तो यहाँ पे phi1 into S1 plus phi into S आएगा. Is it correct? yes, ma'am. MMF of first part and this is MMF of central part. ठीक है? This is according to A B C A. For next ADCA. For ADCA, what will be the MMF in terms of N and I? क्या आएगा MMF? Phi 2 S2. N into I N into I is equal to phi 2 S2 plus Phi S. Phi S. phi s. Very good. So N into I is equal to phi1 S1 plus phi s. N into I is equal to phi 2 S2 plus phi s. But N into I is nothing but your total MMF of your parallel circuit. Is it correct ना? N into I को क्या बोल रहे हैं Yes, आप? ma'am. This is the total MMF of your circuit. Correct. So, general formula will be
total mmf of parallel circuit is equal to mmf of either first or second part plus mmf of is it correct? From these two relations, you can say that total mmf of this parallel magnetic circuit is nothing but mmf of either first or second part. दोनों फॉर्मूले में सिर्फ क्या चेंज है? phi 1s बने यहाँ पे phi 2s है और phi s is the common, correct? So you can write phi 1s1 or phi 2s2 plus phi into s. Clear? Simple, very simple relation मैम of yes मैम ये किरचॉफ लॉ जैसा है शायद. yes it's like Kirchhoff's law, Kirchhoff's voltage law जैसा है ना. Yes, exactly. So you can say that it is the parallel magnetic circuit flux gets divided, correct, but mmf remains same. लेकिन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में क्या था रे? सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में क्या था? टोटल mmf is equal to बताओ. L1 H1 plus L2 H2 means in theoretical language you can say that mmf of series circuit is equal to mmf of first part plus mmf of second part plus mmf of third part, correct, and so on. Is it correct? Hello? Is it? Yes, ma'am. Yes, Okay. ठीक है. Now मैग्नेटिक सर्किट विद जो एयर गैप है उसका मैं आपको फोटो सेंड करूंगी. उसमें इतना कुछ नहीं है डिटेल्स, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द सिमिलर comparison between electrical and magnetic circuit. Is it clear? Parallel magnetic circuit? Yes, ma'am. Okay. Okay, now in comparison of electrical and magnetic circuit, we have to study similarities and dissimilarities. ठीक है. मैंने जैसे बताया था कि flux is analogous to current, correct? Then voltage or EMF is analogous to MMF. So yes, any doubt? Okay. So, but the flux can flow through the air, but current cannot flow through the air. So, in between electrical circuit and magnetic circuit, there are some similarities, some are the dissimilarities. So, we have to study those similarities and dissimilarities between the electrical and magnetic circuit. So, first we will see the similarities. Now, you people tell me the similarities and dissimilarities. Start. बोलो. जल्दी एक बताओ. चलो डिस्कस करेंगे. First point. Current is analogous to flux. हाँ, तो अभी देखो कैसे लिखना है. यहाँ पे करंट एंड यहाँ पे फ्लक्स. तो करंट की डेफिनेशन लिखो, यहाँ पे फ्लक्स की डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? कैसे डिफाइन करते हो करंट? करंट
चार्ज पर यूनिट लेंथ या हाँ, फिर एरिया. flow of electrons, correct, or flow of electrons through the electrical circuit is known as the current, and flux means total number of magnetic lines of force is nothing but the flux, correct. First point is clear. Yes, ma'am. Okay, next. बताओ क्या लिखा है मैंने सेकंड पॉइंट. Distance. Reluctance. Resistance and reluctance. So definition की form में लिखना है. In electrical circuit, opposition to the flow of current is resistance, and in magnetic circuit, opposition to the flow of flux is the reluctance. Okay. Next. हाँ, और इसी में आप बना सकते हो सेम पॉइंट, नहीं तो दूसरा भी बना सकते हो. Resistance is RL by A, and S is, बताओ अभी. S Rho phi by A. रो रहता है क्या मैग्नेटिक सर्किट में? No, ma'am. और जस्ट कंपेयर एन आई बाय phi. इन फॉर्म ऑफ, अभी देखो हम सिमिलैरिटीज लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लेंथ एंड एरिया के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे भी उसी फॉर्म में चलेगा. L by mu zero mu r into Not mu Very r. good. Very good. L divided by mu 0 mu r into A. Very good. Next. Third. इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन रहता है? EMF. यहाँ पे MMF. How will you define the EMF? EMF कैसे डिफाइन करोगे? electromagnetic force. The electrical force which is required to drift the electron, correct, to drift the electron in electrical circuit is known as the electromotive force, and magnetomotive force is the magnetic force which is required to set up the flux in magnetic circuit is known as the magnetomotive force, correct na? Yes, ma'am. Correct. Next. So मैम MMF, हाँ, yes. मैम MMF का एक बार फिर से बताओ. Magnetomotive force, the mechanical force, okay, magnetic force which is required to set up the flux, correct, to set up the flux. Mute your mic. So EMF is equal to क्या रहता है फॉर्मूला? क्या रहता है फॉर्मूला? Current into resistance. Yes, EMF is equal to, Number of turns into. and in terms of this analogous, इसकी analogous Flux into resistance. reluctance. Reluctance. Yes, next point. बताओ अभी, आप बताओ और point. Units. Units के नहीं, point नहीं लिख सकते units के. और कुछ रहेगा similar point. बताओ. ये जो point है ना, resistance and reluctance का, resistance is opposition to the flow of current and reluctance is opposition to the flow of flux. तो अब इसके बाद अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा, मींस वो दो पॉइंट हो जाएंगे आपके. Resistance is directly proportional to length and reluctance is also directly proportional to length. Resistance is inversely proportional to area of cross section and reluctance is also inversely proportional to area of cross section. तो ये दो पॉइंट्स हो गए, टोटल 1 2 3 पॉइंट्स हो गए. ये फोर्थ हो गया, ठीक है. 1 2 3 4, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया. नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट पॉइंट. वोल्टेज इज एनालॉगस. EMF वही है ना, EMF is voltage, EMF is nothing but voltage. ओके मैम. Okay, next. Reciprocal of resistance is रेजिस्टिविटी. अरे
देखो आपकी Conductance. कंडक्टेंस, आपकी अगर यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया टू कंडक्ट द एमसीक्यू एग्जाम, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर कंफ्यूजिंग इन दिस स्मॉल पॉइंट्स. रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस ही है. रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, सिंपल है ना. एंड यहाँ पे permeance, correct. 1/s is permeance. One more thing, in electrical circuit Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law are applicable. ठीक है. एंड वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के लिए अभी कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि ये Kirchhoff's law जैसा है ना. तो इन मैग्नेटिक सर्किट में Kirchhoff's flux law and Kirchhoff's MMF law होता है. ठीक है. सो इलेक्ट्रिकल सर्किट में Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law are applicable, and in magnetic circuit Kirchhoff's flux law, current के analogous flux and MMF law are applicable. समझ में आया? सिमिलरिटीज समझ में आया क्या? ओके. नाउ नेक्स्ट इज द डिसिमिलरिटीज. मैंने ये पीपीटी पे ये किया है, दिखाती हूँ. Negative effect of an electric current cross and dot convention. ये तो अभी मैंने पढ़ाया है, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं. सी इलेक्ट्रिकल सर्किट, हाँ एक डेफिनेशन का भी पॉइंट ऐड कर सकते हो. पाथ ट्रेस्ड बाय करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड पाथ ट्रेस्ड बाय magnetic flux is called as a magnetic circuit. EMF is the driving force in electrical circuit and its unit is the volt, and MMF is also driving force and its unit is ampere turns. Next is the there is a current in electrical circuit which is measured in amperes, and flux is there is a flux in magnetic circuit which is measured in Weber. The flow of electron decides the current in a conductor, and the number of magnetic lines of force decides the flux. Next is the resistance opposes the flow of current, and यहाँ पे reluctance opposes the flux. यूनिट लिख सकते हो ओहम, यहाँ पे एम्पियर टर्न पर वेबर. नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, एंड मैग्नेटिक सर्किट में एस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय वो वन नहीं है, एल है वो एल डिवाइडेड बाय म्यू जीरो म्यू आर इनटू ए. मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. मैडम दिख रही. जिनको नहीं दिख रहे वो मेरा पीपीटी सर्च करो नीचे और उसको पिन करो. ठीक है, पिन करो उसको. द करंट डेंसिटी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स डेंसिटी रहती है. फॉर्मूला ये भी लिया है हमने. एंड लास्ट पॉइंट इज द किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल टू द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द मैग्नेटिक सर्किट. किरचॉफ्स एमएमएफ लॉ एंड फ्लक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द मैग्नेटिक सर्किट. नाउ दीज आर द सम डिसिमिलरिटीज. There is no magnetic insulator. आपको पता है why we are using the insulation?
इंसुलेशन क्यों यूज करते हैं? हेलो, इंसुलेशन क्यों यूज करते हैं? इंसुलेटर सबको No, पता ma'am. है। बताओ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और To avoid short circuit. सॉरी आवाज नहीं। Safety, correct. Now all of you know that in every electrical instrument, in every electrical wire, there is a insulation used. Why? Because to prevent the leakage of current. Is it correct? To prevent the leakage of current, like a plastic, rubber, these all are insulator. So आपने अभी जहाँ पे बैठे हो वहां पे कौन सी भी एक वायर ले लो, उसके ऊपर प्लास्टिक रबर का शीट रहेगा, दैट इज न कवर रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ इंसुलेशन. एंड to prevent the shock or to prevent the leakage of current, we are using the insulator. But in magnetic circuit we doesn't know the actual flow of flux. फ्लक्स पता है, इमेजिनरी टर्म है वो, फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसको फ्लक्स नाम दिया साइंटिस्ट लोगों ने, मींस दैट इज द इमेजिनरी टर्म. आपको फ्लक्स नहीं दिखता है, करंट भी नहीं दिखता है, बट द पाथ ऑफ दैट करंट इज फिक्स्ड. हमें पता रहता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव वो फ्लो हो रहा है. सो उसको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिरेक्शन पता है तो हम वहां पे इंसुलेट कर सकते हैं. लेकिन फ्लक्स में क्या है रे, दैट इज इमेजिनरी, सो वी डजंट यूज, इट इज इम्पॉसिबल टू यूज द इंसुलेशन in case of magnetic circuit. Therefore first point is related to insulator. There is no magnetic insulator as flux can pass through all material, even through the air as well. And for magnetic flux there is a no perfect insulator. But electrical circuit mein there current cannot flow through the air, it only flows through the metals, good conductors. So we can insulate any circuit, correct. Next, magnetic circuit में magnetic flux does not flow but it setups in magnetic circuit. Actual flow हो रहा है या नहीं हो रहा है, we don't know magnetic flux, because what happens, it is the imaginary and electric current is actually flow of electrons. Therefore ये एक difference का point हुआ है. Next is the at constant temperature reluctance of magnetic circuit is not constant. ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिकल, और इन सिंपल वर्ड्स आप क्या लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. इज इट करेक्ट ना? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर बट रिलक्टेंस does not depends upon the temperature, it depends upon L. कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड है वो देखो, लेंथ डिवाइडेड बाय S का फॉर्मूला L डिवाइडेड बाय म्यू 0 म्यू r इनटू A. ठीक है, एंड R का फॉर्मूला क्या है, रो L बाय A. सो लेंथ एंड एरिया दोनों में कॉमन है, बट दोनों में डिफरेंट टर्म कौन सी है, यहाँ पे रिलक्टेंस में म्यू है, हाँ म्यू है ना, परमेबिलिटी है. सो यू कैन से दैट द रिलक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द म्यू आर. ओके, रिलेटिव परमेबिलिटी. म्यू 0 तो कांस्टेंट टर्म है, सो यू कांट से इट डिपेंड्स अपॉन म्यू 0. सो रिलक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द म्यू आर, एंड म्यू आर किसके रिलेटेड है, मटेरियल के ऊपर. आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, आयरन यूज कर रहे हो, स्टील यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो. सो द at constant temperature it does not constant, but resistance remains constant at constant temperature. Is it correct? Is it correct? Okay. Yes, ma'am. Next, magnetic circuit में once magnetic flux is set up, there is no need of any energy. करेक्ट. एक बार वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो गया तो वहां पे एडिशनल एनर्जी की जरूरत नहीं है. बट इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंटिन्यूअसली यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी as long as the current flows through the electrical circuit. So these are the some similarities point, some dissimilarities point. Whenever there is a theory question, theory exam, at that time this question comes for 8 or 6 marks. Correct. तो आपको एग्जाम में मेंशन करते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट विद सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. तो अगर 8 मार्क के लिए तो 4 सिमिलरिटीज 4 डिसिमिलरिटीज लिखो.
4 से भी ज्यादा लिख सकते हो क्योंकि एक आधा पॉइंट कुछ भी गलत हो सकता है. सो मोर देन 4 यू कैन राइट. Okay, now we will take numerical. These points we will cover in next lecture. Now I will take the numerical. All of you please take down your notebook, pen with you. कैलकुलेटर लिया है क्या सब लोगों ने? नहीं लिया अभी तक? नहीं मैम, लिया नहीं अभी तक. तो मैथ्स नहीं हाँ, मैडम, मैम. कौन सा लेना है? मैथ्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो फिर? फोन में करते हैं. फोन में करते हैं, लेकिन वो फोन के आंसर से एग्जैक्ट नहीं आते हैं ना. हाँ मैडम, कौन सा कैलकुलेटर लेना है? मैं बता कैलकुलेटर. साइंटिफिक कैलकुलेटर चलता है, FX 99 समथिंग रहता है. देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर इंजीनियरिंग के लिए जो. मैम सब सब्जेक्ट के लिए चलेगा क्या? मैम अमेज़न से लिंक भेज दीजिए हमें. हेलो हेलो मैम, अमेज़न से लिंक भेज दीजिए उस कैलकुलेटर का ग्रुप पे मे बी. और अच्छा, अमेज़न से खरीदोगे क्या? अभी तो शॉप्स खुले हैं ना, शॉप से ले लो ना. मैम मॉडल नहीं मैडम कोई मिलता है नहीं सब मिलता. सब्जेक्ट के लिए चलेगा क्या? यस यस यस, सारे सब्जेक्ट के लिए चलता है वो. मिलता ही नहीं मैडम इधर. कहाँ पे रहते हो? अमेज़न से ही खरीदना पड़ेगा मैडम. ठीक है, अमेज़न से खरीद लो, नो इशू. ठीक है, नाउ आई विल dictate the numerical. Okay. Write down the numerical. A coil of 500 turns. A coil of 500 turns is uniformly wound on iron ring. Okay, coil of 500 turns. So क्या है वो? Given first क्या है? 500 turns means N. uniformly wound on iron ring of mean circumference 30 centimeter. क्या दिया है? 30 centimeter. पाई डी. L करेक्ट. पाई डी है, करेक्ट है, बट circumference is nothing but length. हमें एग्जांपल में लेंथ चाहिए होती है ना, so it is length. Having area of cross section 15 centimeter square, so it is A. 15 centimeter square. 30 centimeter is equal to 30 to 10 to the power. Correct ना? यस मैम. Convert in given only. Next, the current through the coil is 2 ampere. Current through the coil is 2 ampere. Current and the relative permeability of the iron is 400. Mu R is 400. Mu R को unit नहीं देता है. Find MMF, reluctance and flux in iron ring. Find MMF, reluctance and flux in the iron ring. चलो बताओ जल्दी. First solution. MMF. into I. N into I. N into I. 500 into 2. How much? 1000. Unit. Ampere turn. Ampere turn. Very good. MMF. Next is the reluctance. S. MMF upon flux. अरे बेटा, ये फॉर्मूला बताने से पहले यहाँ पे देखो ना किधर फ्लक्स है क्या? L upon mu zero. L upon mu zero. L upon mu R naught mu A. R A.
हर एक टर्म के लिए अगर दो दो फॉर्मूले हैं तो आपको पहले गिवन में देखना है कि कौन सी क्वांटिटी दी है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका आंसर आता है यूनिट, बताओ रिलक्टेंस का। एम्पियर टर्न पर वेबर। करेक्ट। नेक्स्ट रिलक्टेंस हो गया, और क्या फाइंड आउट करना है? फ्लक्स। अभी फ्लक्स कैसे करोगे? ये दोनों यूज करके करोगे, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। करेक्ट। Is it correct or not? Yes, ma'am. Yes. Okay, so these are the answers. Now in same numerical they mention that if an air gap of 1 mm is cut in the ring, find reluctance of air gap. अगर MMF 1 mm का सॉरी जो Ma'am, रिंग unit आएगा ना Weber inverse सॉरी unit. कौन सा Ma'am, क्योंकि divide में है ना Weber. सॉरी Ma'am, flux का Weber फ्लक्स inverse. का वेबर नहीं फ्लक्स का यूनिट वेबर ही आता है ना, मलिया। Okay, okay, yes, ma'am. यस ना? Yes, ma'am. यस, फ्लक्स का बेसिक यूनिट वेबर ही है ना। नाउ नेक्स्ट इज उन्होंने दिया है कि वो जो रिंग थी हमारे पास उस, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आंसर का। ठीक है, नेक्स्ट is after the in the second part they have cut the 1 mm air gap। 1 mm का जो पार्ट था रिंग का वो उन्होंने कट किया, तो वहां पे क्या क्रिएट हो गया? एयर गैप हो गया। एंड फॉर दैट एयर गैप फाइंड आउट द रिलक्टेंस। उस एयर गैप के लिए उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड आउट द रिलक्टेंस। ठीक है, सो फॉर दैट सेकंड पार्ट आई विल राइट हियर डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है क्या एयर गैप की? नो मैम। नहीं ना? सीरीज में इमेजिन कर सकते हो, एक सर्कुलर रिंग है उसमें 1 mm का एयर गैप क्रिएट किया। ठीक है, सो व्हेन एयर गैप, अब ये सेकंड पार्ट आंसर का। ठीक है, अगर टोटल लेंथ आपके इसकी टोटल लेंथ रिंग की कितनी थी? 30 सेंटीमीटर थी। ठीक है, उसमें 1 mm का एयर गैप किया, सो जी गैप के लिए जी 1 mm। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर? 1 into 10 to the power 3. minus 3, not 3 minus In divide, yes, ma'am. yes। नेक्स्ट अभी ये एयर गैप हो गया। ठीक है, ये टोटल लेंथ थी। नाउ जो कौन सी रिंग है? आयरन रिंग है। सो आयरन का पाथ कितना आएगा? कैसे करोगे कैलकुलेट? आयरन का पाथ कितना आएगा? L minus LG. Yes, L minus L LG. minus H। So 30 into 10 to the power minus 2 मीटर करो, minus 1 into 10 to the power minus 3। तो इसका आंसर आता है 2 into 10 to the power minus 3. हाँ 0.299 मीटर। ठीक है, ठीक है, ओके यस मैम। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट इज हमें क्या चाहिए? एयर गैप का रिलक्टेंस चाहिए। नाउ अगर इन दिस रिंग सपोज टोटल रिलक्टेंस इज S, देन एयर गैप का SG एंड आयरन का SI रहेगा। इज इट करेक्ट? यस मैम। Is it correct? Yes. So S is equal to SI plus SG. Now all of you know that in first part
whatever reluctance you have calculated, this is nothing but S, right ना? यस मिस है ना? जब complete ring है, तो वो reluctance is nothing but S. Is it correct? Yes, ma'am. यस मैम Wait, huh? Flux. क्या calculate करना है? If an air gap of 1 mm is cut in the ring, find the reluctance of air gap. Okay. Air gap का ही reluctance calculate करना है. ठीक है. LG है म्यूजियम. अच्छा. Air gap का reluctance तो directly calculate कर सकते हैं ना? कैसे calculate S करोगे? by H G. S by H G. S. ऑलरेडी है ना, निकाल के. हाँ. What is the formula for HG? बताओ. LG by LG by mu naught mu naught EG. mu naught Mu naught mu R Mu और क्या बन रहेगा? AG. EG आएगा सीधा. है ना? तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली एल गैप का आपका पुट करो वैल्यूज. LG है 0.001. म्यू नॉट आता है 4.2 10 to the power -7 and area of cross section सेम रहेगा 15 into 10 to the power -4. So the reluctance of air gap is 5.3. ठीक है. और एसआई का कैसे आएगा? अगर एसआई का पूछ लिया तो क्या आएगा? LI upon mu naught mu R AI. हाँ, यहाँ पे mu naught mu R म्यू आर कितना है? एआई एरिया तो सेम ही रहता है. 1 point म्यू आर कितना है? 400. हाँ, म्यू आर 400. ठीक है. तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हो. क्लियर? इज इट क्लियर? न्यूमेरिकल? Yes, ma'am. ठीक है. ठीक है. नाउ ना टाइम बचे. टाइम तो खत्म हो गया. Okay, fine. We will stop. We will conduct more numericals on next lecture. I will take the attendance. Don't leave the meeting. मैं जब attendance लेती हूँ उसके बाद लेफ्ट करो. और मैं जो वीडियोस डाल रही हूँ वो देख रहे हो ना? ये जो प्रेजेंट लेक्चर में. ठीक है. जो लोग एब्सेंट थे वो प्रीवियस वीडियोस देख लो. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया सब लोगों ने? Yes, ma'am. ठीक है. उसके ऊपर मैं जितना हो रहा है उतने नोट्स वगैरह डाल रही हूँ. सो गो थ्रू दैट, प्रैक्टिस डेली. ठीक है. डेली प्रैक्टिस करो. रोल नंबर 1 absent. Roll number 1 absent. Two. Present, madam. लेफ्ट करो होने के बाद. 3. present मैम. 4. Present. 5. present 6. 5. 6. 7. Present. 8. 8.
9, Present, ma'am. 10, Present, madam. 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, 14, 15, 16, 17, Present, ma'am. 17, Present. 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21. Present, ma'am. लास्ट लेक्चर ऍबसेंट होतास का? 22, 22, 23, Present, ma'am. 24, 25, Present, miss. 26, Present, ma'am. 27, Present, ma'am. 28, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 30, Present, ma'am. 31, 31, 32, 33, Present, ma'am. 34, Present, Ma'am, 32 present. 32 present, 33, 30, 33, okay, 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, Yes, Excuse me, ma'am. Hmm. 31 is present. Mic Yes. is not working. 31, Yes, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, Present. 40, 40, 41, Present, ma'am. 42, 42, 43, 44, Present, ma'am. 45, Present, ma'am. 45, are you there? Yes, ma'am. 46, Present, ma'am. 47, 48, Present, ma'am. 49, Present, madam. 50, Ma'am. 51, 51, 52, Present, ma'am. 53, 53, 54, Present, ma'am. 55, Ma'am. 56, Present, ma'am. 57, Present, ma'am. 58. Present, ma'am. Okay, thank you everyone. Ma'am, hello. Ma'am, 32 केलं ना present तुम्ही? तेजस तुला प्रेझेंट केलाय बाबा. हो हो चालेल. थँक्यू मॅम. ओके, थँक यू एव्हरीवन. हॅव अ Ma'am. गुड डे. हॅलो. हा बोला. मॅम माझी प्रेझेंट ही माहिती करायची होती मला. प्रेझेंट आता डायरेक्ट मंथ एंडला कळेल. बरं ठीक आहे मॅम. हम्म. मॅम ते कॅल्क्युलेटरचं तुम्ही सांगणार आहात? कॅल्क्युलेटर मी सांगते, मी आज आणलं नाही ते लेक्चर हॉलमध्ये. उद्या सांग हो, किंवा ठीक. फोटो पाठवते. हो हो चालेल. ओके.